You put your mind in order. You now are clear that what is the first point, what is the second point, what is the third point, what is the fourth point. You have got the clarity. Once you have got the clarity about all the points, main points discussed in the whole of the passage, then what happens? Then you read it. So that you have a cohesive idea of the passage. पूरे passage का आपको एक cohesive idea मिल जाए. अब आप from top to bottom, उसको एक is the sense of unity. With the sense of unity, you read that whole passage. You know, you might have heard a story in the past with the Fatma Barkat. What was that story? Then if you cannot solve the problem, dissect it into two small components. वो कहता है जी छड़ियाँ ले लें और उन छड़ियों को आप क्या करोगे? छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लो, तोड़ना आसान हो जाएगा. Then they are combined together, it is difficult to break down, right? So any problem that you face in life, this is the only solution that you dissect into small components. So segmentation is the best solution to dissect the whole passage into small components, so that you analyze each and everything in the minutest possible way. Minutest possible way में हर चीज को देख लें. Once you have the idea of each and every point given in the passage, the main idea, your mind would be able to filter non-essentials. Your mind would be able to filter all non-essentials. You have picked up the initial information, the important information you've got. ऐसा ही है ना? अब जब आप करेंगे ना तो once you now in this way approach the passage with the sense of unity, you have the cohesive idea of all the points discussed in the passage, and that unity you would be able to bring in your pressing without breaking the connectedness, without breaking the coherence of the passage. You got my point? समझ आ गई बात की? तो आपने वो चीज कर लेनी. अब आप ये forward reading करो. Read it. You may read it once. It would work in once if you read it. Without, I mean, there is no need to read it twice. You can read it, but there is no need as much as such. What happens is कि आपको एक पूरी idea हो जाएगा. Now we come to the next stage. Once you have got the idea, the पूरे passage में क्या है, and you also align with the all, you know, the titles that we made, the heading we made, just to get the पूरे passage में idea क्या है. जब आपने उसके साथ align कर लिया, तो एक आपको realization होगी कि I have sensed the crux of the passage. I have left no point there. आपको ये realization पढ़ने के दौरान हो जानी चाहिए that I'm not missing any component. I'm getting all the points in my mind and they are in proper order. Once you do that, तो अब आपने जाना है the next segment, that is of making the draft. Unfortunately, what I've seen is the people treat this rough draft in a very rough manner. This is the practice that you should work on, जिसके ऊपर लोग नहीं काम करते हैं. What happens is that they treat it, either they ignore it or they treat it in a very rough manner. उसको rough नाम लिखा हो, rough draft, उसको rough ले लें. What I believe is that it must be written in a neat way, in a clean manner, and you must treat it like an outline of an essay. Just you treat an outline of an essay, because your mind then remains in a structure. You must treat it in this particular way. So there are two ways. One is the training that you're getting here, you know, before the exams. For example, you've got 3 to 4 months, you're preparing on this, and then comes the final stage when you appear in the exams. So उसमें दोनों में मैं draft की practice का एक तरीका बताऊँ. Initial part पर, initially इस stage पे है, तो आप 2 draft बनाना सीखें. And both the drafts have got different objectives. In exam, you have to make just 1 draft. In exam, you have to make just 1 draft. But before that, you practice on that so that your mind is conditioned. आपका mind उस तरीके से बन जाए कि मैंने चीज़ों को, ideas को extract कैसे करना है. फिर जब points को extract कर लेना, तो अपने points से जो exact point निकालना है, जो crux निकालना है, उसको कैसे pick करना है, वो आसान हो जाए. Rather than you just go back to the text, original text again and again, and get confused somewhere because of long sentences, intricate sentences, complex ideas. आप उस पर confuse करेंगे अपने आप को. उससे बेहतर है कि ये rough draft जो है ना, during the training only, it will be working like a filter. ये filter की तरीके से काम कर रहा है. समझ रहे हैं? This is what most of the people ignore, and that's why while writing a Precis, they get shocked, they get confused. Oh my God, मैंने वो point छोड़ दिया, वो point रहता था, उसमें ये बात नहीं थी, या मेरे words पूरे नहीं हो रहे. I mean, most of the people count the words when they finish the Precis. They finish the Precis. Rather than counting the words even at the end of the Precis, उनको शुरू से अंदाजा होना चाहिए कि अपने words उनके control में होने चाहिए.
आपके वर्ड्स आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे कहां पर जाके रोकना पड़ेगा और विदाउट मिसिंग एनी ऑफ द आइडिया, और कहां पर हो सकता है अगर आइडियाज जो है वो मुझे स्ट्रेच करने पड़ सकते हैं इन ऑर्डर टू फिल द लिमिट ऑफ द वर्ड्स, तो मुझे पूरी करने के लिए करना पड़ेगा। इसको नहीं पहले लोग काउंट करते। जब वो पैसे लिख लेते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, तो वो समझते हैं सिर्फ यही स्टेज है जिसमें वर्ड्स काउंट करने हैं। सो दैट बिकम्स दैट अनकंट्रोलेबल फैक्टर, वो फिर अनकंट्रोलेबल फैक्टर बन जाता है। होना चाहिए शुरू में, इट शुड बी कंट्रोल्ड। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरी डायरेक्शन क्या है, मेरे पॉइंट्स का सीक्वेंस क्या है, तो सारी चीजों को आपने पहले देखना होगा। आगे समझ, इस पर किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सर वैसे एग्जाम में जो FPSC आती है वो तो बहुत बड़ी होती है, तो उसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कितने वर्ड हैं ओरिजिनल प्रेसिज? इसके कैसे करेंगे? वर्ड काउंट है, वर्ड काउंट का तरीका वो मैं नेक्स्ट स्टेज पे बताऊंगा। वर्ड तो काउंट करेंगे, लेकिन ये एग्जाम ये प्रीमेच्योर क्वेश्चन है, आपने यहां से प्रैक्टिस करनी है। देन यू विल रियलाइज दैट आई हैव सेड दैट द साइज ऑफ द पैसेज इज नॉर्मली बिटवीन 350 टू 550 वर्ड्स। ठीक है कि नहीं? और वो वर्ड काउंट करने का तरीका होता है कि आप एक जनरली लाइन जो पहली दूसरी दो लाइंस में देखते हैं और उसकी एवरेज देख लेते हैं, वर्ड्स को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यू जस्ट हैव अ रफ आइडिया ऑफ दिस। इट डज नॉट मीन दैट यू कीप काउंटिंग ईच एंड एवरी वर्ड एंड स्पेंड योर टाइम वेस्टिंग इन काउंटिंग ऑल द वर्ड्स, बट यू हैव अ जनरल असेसमेंट इफ यू प्रैक्टिस लाइक दिस। शुरू से अगर आप प्रैक्टिस करें ना कि नॉर्मली साइज क्या होता है, एवरेज साइज क्या होता है, एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन्स में आ रहा है, उनको देख के उसको मल्टीप्लाई करें। तो ये कैसे वर्ड लिखेंगे, फिर उसको कैसे प्लस माइनस करेंगे, ये मैं सारी वो एग्जैक्ट लिमिट को कैसे पूरा करना है वो तो मैं आगे चल के बताऊंगा। यहाँ तक बताएंगे, पॉइंट समझ आ गए? यहाँ तक ये समझ आ गया?